Bro, I did civil engineering. क्या बात कर रहा है? Yeah. क्या बात कर रहा है? Did you think like 6 months में acting के बाद Yes. immediately Yes. film Yes. मिल जाएगा Yes. यश राज Yes. का? Yeah. Yes. I had to just say Inkilab Zindabad. And 70 people had to say Inkilab Zindabad. That was the audition. इनकलाब जिंदाबाद. My assistant would do. Chal next. ए लाइट दे रहे हैं मुंह पे. ए देख रिफ्लेक्शन आ रही है. देख रहे हैं. There's no struggle. Like हाँ हमारा शो का ये हम स्ट्रगलर्स है बट मैं ऑडिशन में हाथ खड़ा करके यार ये नॉट फिट खाया तो पता है ना यार कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो बहुत चीज सीखने को मिलती है. Are you a loser? Are you a freak? Do you need a lover? Don't talk to me. Don't talk to me. Don't bother me. Welcome to Real Strugglers, where we talk to real filmmakers and actors about their struggles working in the chaotic world of films. Today, our guests are Shalin Thakur and Robbie Singh. Hey, what's up? Robin Singh. Yeah, whatever. So, Robbie and Shalin know each other from Barry Jobs, right? Yeah. How old were you guys when you came to Bombay? You were 24 and I was 22. उसका screenage बढ़ा दिया अब. He's a 91 born and he came in 2015, so 23. Okay. मैं था मैं Yes. 24. I was 22. So, before coming to Bombay, what were you guys doing? I worked in an IT firm, UST Global, for 2 years. And then I decided to quit the job and pursue this. By the way, I have no background to this industry at all. So how I came to be here was during the job. Like one year of the job, I was like, I was sitting in that cubicle as like, मेरे साथ के जो लोग थे, they were also of every age group, like 30, 40, 50, even 60 years old. Same cubicle. I was like, dude, what is this? मतलब मेरे को इतना दिख गया था. Different versions of अबे मुझे yourself. दिख गया था यार कि I don't want to be like this sorted Yeah. right now because 24 साल के यार कुछ भी नहीं है. तो that is a moment थोड़ा introspection करके what do you want to do? I started watching films. I always used to like films. वहाँ से I decided कि हाँ यार चल let's give it a try. Came to Bombay. तेरा क्या कहानी है? Bro, I did civil engineering. क्या बात कर रहा है? Yeah. क्या बात कर रहा है? You don't know it? After that, I just came to Mumbai. But did you for what? But for you already during engineering only you knew you wanted to be an actor. Yeah. So I was searching for like, so that I can get place in MSD or FTI, but it was so tough. I got a connection there with some peon or some staff over there. Talked on the Facebook and inquired everything, and he said, you gotta have 7-8 plays done with a repetitive theatre. Only that is the way to get into MSD or FTI or whatever. So I dropped the idea, and also it was like you have to spend 3 years and 2 years respectively in NSD or FTI. Why don't I just do a 6-month True. acting course and then, spend my time in getting the job or whatever, searching for the jobs. Okay. So that's it. So then, how did you guys find Barry Jobs? Like, what did you how did you do your research? Just Google, it's on the number 1 list. No, but why did you pick Barry Jobs over other? Because it was longer. Okay. Yeah, 6 months. Other courses are shorter normally. Yeah, very. Yeah. Anupam Kher was like Yeah. 3 months. Yeah. For me, it was more like I had my savings, whatever I had, and I don't want to waste any time. So उस time पे all the other batches were not available, and FTI and NSD का तो वही था scene. So Barry Johal was available. Actually spoke to them quite a lot, like 2-3 times I spoke to them कि क्या है, कैसा है, कौन were the teachers. I tried to find out. I got in contact with alumni. उसके through, like I got confidence थोड़ा. So that's how. But why acting? You won't believe. I told you about the introspection वाला phase, right? उसका I was like कि okay मेरी age कितनी है and इसमें मैं क्या possible है. So I was trying to figure out. You won't believe. मतलब मैं किस चीज़ों को I gave it a shot. I really like to ride bikes and all. तो कि हाँ ठीक है, can I do professionally Grand Prix या फिर something else, cars. तो ऐसे करके I was eliminating things. I like making music as well. उस time पे FL Studio नया मैंने सीखा था and YouTube पे सीख के I was doing that. तो वो थोड़ा ये सारी चीज देख के कि यार फिजिबल क्या है टाइम के साथ, एज के साथ. तो एक्टिंग वाज दैट, बट फिल्म मेकिंग, फिल्म से रिलेटेड समथिंग, बिकॉज आई लाइक वाचिंग फिल्म उस टाइम पे. और कुछ पता था नहीं यार कि एक्टिंग होती क्या, टू बी ऑनेस्ट. वो केम लेटर, like 6 months in the marathon, I think. Yeah.
And for you, why did you want to be an actor? I was doing some sort of mimicries of teachers and other students in my school since the 5th or 6th grade. Yeah, I won the award in mono acting in 5th grade. So that was it. I didn't know back then that this is, you can An make option. it. Yeah, that this is the option. But I was just having fun on the stage in school and in the college also. That was it. And as a professional thing, I took it seriously in 2000, I guess, 13. 2013, that is before you moved to Bombay. Before I moved to Mumbai, yes. So I decided that I want to be an actor. I'll go to Mumbai, and I persuaded my parents that I'm confident about myself and I'll do it. Were your parents difficult to convince? Not at all, not at all. Yours? Not at all, yaar. I mean, वही चीज है यार, especially with my dad. He is like, try it out. He will help you out with everything, but he will not teach. I mean, I'm grateful to him for that. क्योंकि यार जितना भी Like life make your में own सीखे, mistakes. yeah man, he's like, do it. उनको पता भी है कि यहाँ गलत कर रहा है, but he still won't, like, So that's a very good thing, I think, to have, like, as a parent. So what expectations did you come with? Like when you came, did you think like 6 months में acting के बाद Yes. immediately Yes, film yes, मिल जाएगा yes, यश राज का? Yeah. Yes. नहीं मतलब उस एक्सपेक्टेशन तो वही थी यार हाँ. कि हाँ मतलब मैं अभी ज्वाइन करूंगा और ये तो Course ऐसे ही ना, है. एक्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं था. हाँ तो ये तो ऐसे ही है क्योंकि हमारे तो कोई वेट कर रहा है. Not launch wait, करने but के लिए. it was like that, I'll go there and I'll Yeah. find the auditions Audition and I'm clear हो good. जाएगा. I know that I'm good and I'll get it, but that's not the case, There Did are you a lot realize of how other many things. actors are there in Bombay before you came? No. No idea, bro. You didn't realize that there would be lakhs of actors? Yeah, No way. no idea. Full on अपने उसमें थे यार हम लोग. But once we joined in, within 1 month, we started getting the idea कि how bad are we in acting and how basic are we. Basic मतलब यार first 3 months तो हमारे वही थे कि यार to know yourself basically. So Yeah. when you start doing that, when you start like introspecting yourself, वो उसी में पता लग जाता है कि oh my god, like ये चीजें तो हमें पता ही नहीं थी अपने बारे में. Then you have like your fellow actors and all. और हम लोग lucky थे यार, to be honest. I don't know अभी कैसा है उनका. We were so lucky कि यार Barry sir used to be there. आजकल वो सिखाते नहीं. Yeah. He's teaching his. हाँ, I think he opened his own wings. yeah. But उस time पे we were so lucky that he was there and हम लोग की रोज almost वो क्लास लेते थे. Yeah. तो यार on that this thing I think we are very lucky. And to be honest यार, उसके बाद I did theatre as well. And बहुत सारी चीजें करी हैं. वो आपको पता, it's all about, अगर आपको कहीं एक्टिंग सीखनी है ना, I think it's all about, ये सबका मेन कोर फंक्शन एक जैसे ही है. Either you join a theatre company or कोई acting studio, more or less they work like same. No. It's your journey basically. That's what matters, I think. In acting school, what kind of actors were you when you got in? Were you like very stiff, uncomfortable, or was it like you were confident but you just didn't have the right tools? What was it? Yeah, for me, I was very confident. I was not stiff physically also. And वैसे भी यार, like it's just कि यार आप direction नहीं थी मेरे पास. करना क्या है? Like वो चीज हो जाती है कि यार मेरे साथ था कि यार चलो introspection हो गया, खुद को भी पहचान लिया है. But you have that raw energy जब आप आते हो. You don't have the direction. You have the energy, enormous amount of energy. Yeah. तो वो कहीं पे भी फटता है. आप like that's what they teach you कि यार make the effort और अपना range पता लग जाता है यार basically. तो वहाँ पे ही to be honest within 6 months last के उस तक मेरे को पता लग गया था अपना range. And to be honest अगर वो आपको पता लग गया then it's very easy for you. पता लग जाता है कि आप कौन से emotions आपके लिए easy हैं to play with. कौन से emotions are like But these are things you can also get better at, no? Your Yeah, range can 100%. change also through 100%. practice. Yeah. Yes. What about for you? Now it was like that, I had all the elements per se of acting, like energy, confidence on stage, movement, learning the script quickly, and then performing it. I was well equipped with all the elements, but I was not aware of the fact that you don't have to act. You just have to be. And one of our co-student, like my colleague Muhammad Ali Mir and Sushant, they did some sort of theatre before that and they knew it. So one day he told me at his house. So I was doing a scene, we were practicing for the next day, and I was doing the same thing in every rehearsal, in every take,
he caught it. He said, "You are doing it like forcefully. Yeah. You just have to do it like you don't know it." So then that was the idea that changed my perception about the acting. But did acting school also give you the understanding of how to get auditions, how to network with casting directors, how do you? हाँ, नहीं यार. Zero. To be honest, यहाँ पे भी they have मतलब एक idea होता है यार कि हाँ audition होता कैसे. But like you know, I've been to the other side. नहीं, no one, not even theatre, nothing. It's not there. कहाँ से सीखोगे यार? It's a self-learning process, I think. अब 10 ऑडिशन में फेल हो गए. अब मतलब कैसे ऑडिशन हमने दिए, मतलब Yeah, obviously. we all did यार. First year was horrible in terms of मतलब इतने auditioning. गंदे ऑडिशंस दिए ना मैंने, मतलब Yeah. one The time roles were bad or you were no, bad? I was bad. Oh. I froze once यार. Fuck, that was like Okay. सबके साथ होता है यार. Now, that was okay, but the type of casting directors I met, at least, so there are really like genuine ones in Aramnagar, 10, 15 or 20, 25. But there are like some fake ones also. Tell me about fake auditions. Fake ones are just, there's a place called Old Mahada, Janki Devi Babla. अरे भाई There are some few good, like, authentic casting directors also, but there are so many fake casting directors हमारे टाइम पे वहाँ पे who don't have any connections with the industry, but they have set up their casting shops, I would say, and they just call you mint money after ना. just They to ask make for money, bro. They asked for money also, but I didn't give any money, but They say they'll audition you if you pay the money. नहीं, they'll audition you. उस टाइम पे मेंशन नहीं करते हैं वो. मतलब आपके ऑडिशंस वगैरह हो जाएंगे, फिर वो शायद नेक्स्ट डे और समथिंग लाइक दैट कि हाँ लाइक यू नो वी शोड योर दिस थिंग टू द डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, दे रियली लाइक्ड इट, और ऐसा सीन है तो लाइक यू नो दे लास्ट फॉर मनी. अब यार नए लोगों को नहीं पता. some are just like for build their casting agencies, just, you know, they will say that we are doing an ad for Coca-Cola, so that they just gather the So everyone actors, applies, then they get all applies their and- numbers and details. Yes, just to gather the data. कई बार हाँ डेटा I went to one audition. They were like, there was a very small room, and there were like 70 actors over there. And it was like, जो जैसे मुर्गे होते हैं ना, Oh, damn. एक के पीछे दूसरा मेरे को याद आ तीसरा. गया. I had to just say Inqilab Zindabad. And 70 people had to say Inqilab Zindabad. That was the audition. And everyone was trying to do it differently. How differently you will do it, no? You'll only sound different, I think. Yes. Because That was it. अबे मतलब उन लोग It was like कि Inqilab, तो बोलो Inqilab Zindabad. इनकलाब जिंदाबाद. My assistant would do, chal next. imagine. Next. Imagine. Next So like they this. don't need you to cut camera. Bas Yeah, that's it. line Yeah, no to need, come. no need, yeah. So this was the first 1 year. This was the initial year, yes. Yeah. How were you guys making money at the time? यार फॉर मी एक्चुअली मेरे Yeah, साथ that- एक्चुअली were your family supporting you at that time? नहीं यार मेरी सेविंग्स थी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं मेरे सेविंग्स से निकल गया था एक साल. बट मेरे साथ ऐसा हुआ था, द मोमेंट आई लेफ्ट बैरिजॉन, मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था. किसका? दैट वाज एनएसडी के ही थे, 5 सेंसेस थिएटर ग्रुप. सो उनमें एनएसडी पास आउट्स थे, तो दे वो भी सिखा रहे थे, तो मोरलेस सेम चीज़ ही था उसमें. बट उनमें एक प्ले भी एंड में यू हैव टू मतलब वो करवा रहे थे पूरा. तो उस चीज़ के लिए मैंने किया था. उसमें भी यार कई एक्सरसाइजेज अलग थी जो मुझे पता लगा. जैसे ही मैंने वो 3 महीने खत्म किया, आई गॉट दिस प्रोजेक्ट किरदार, इट्स अ वेब सीरीज, तो इन पुणे. ये सब मैंने पुणे की वो वेब सीरीज करी फॉर अ मंथ, शूट था उसका. वो सब करके वो भी चली नहीं इतनी ऑब्वियसली, बट वो खत्म करने के बाद मेरा ये वाला फेज आया था. तो इनिशियली जब मैं बैरियन से निकला था, हैड वर्क. Okay. उसके बाद फिर ये स्ट्रगल शुरू हो गया था एकदम ही, फॉर अ ईयर आई थिंक. सो 17 को ये सब चल रहा था मेरा. So when you finished your savings, what did you do? खत्म था यार. उसके बाद ऑब्वियसली घर से पैसे मांगे थोड़े बहुत, एंड देन लाइक यार ये सस्टेनेबल तो नहीं है. थिएटर ग्रुप से भी पैसे वैसे नहीं मिलते यार इतने. स्टार्टेड असिस्टिंग 500,000 rupees per show ऐसा मिलता है ना? यार, वो भी मतलब अगर आपका थोड़ा नामी है कोई तो मिल जाता है. जैसे ये मैंने असिस्ट किया था इनको, पिया बैठे रुपया पे अतुल कुमार को, तो उसमें आपको मिल जाता है थोड़ा बहुत. बट अलग है यार थोड़ा चीज़ है. थिएटर में पैसे नहीं है यार. एटलीस्ट बॉम्बे की लाइफस्टाइल तो आप नहीं कर सकते मैनेज. I did some part-time jobs, bro. ओ भाई तेरा गलत है. Yeah, बता. I worked as a Swiggy delivery guy for like 7 months. And for 2 years, I worked for a lady called Jennifer Newton. She lives in Australia, basically. What were you doing for Jennifer Yeah, Newton? so I was her alarm. Meaning? He She used used to trade.
trade. Yeah, he used to invest in New York Stock Exchange. And she lives in Australia. So I used to wake her up to watch her charts. Crazy भाई. Like for every half an hour, like after every half an hour, I used to see the changes in the market. And whatever she told me, whatever changes, I used to watch and I used to tell her. Oh, okay. So, and how is Swiggy? That was Yeah. sick, bro. क्यों? A lot of No, lot Robbie of had a lot of experience. stories from his Swiggy days. Lot of stories, bro. Lot of stories. Tell some. There is You a delivered to any actor or what? producer, a Bengali film producer. You knew he was the producer? I checked it after reading the name. Not Because it delivering was a से very big पहले house. देखते हैं कि It हाँ was a मैं big कहाँ bungalow. deliver कर It रहा was a हूँ. big bungalow. So I just checked it. But there is a big spectrum of people, bro. Like people in so met Lokhandwala very give interesting people. yeah, very interesting people. People in Lokhandwala give you tips that you can't even imagine, like for 300, 200 rupees per delivery sometimes. सही है. And there are a lot of bungalows. And there are chawls where there is no banking name or वहाँ डर है flat name. So वहाँ डर है कि लूट लिए जाओगे. yeah, What's the best approach for an actor, नया actor के लिए, to meet casting directors, get their numbers, give auditions? What's यार the ये best तो approach? मिल ही जाता है. नंबर तो मतलब कास्टिंग डायरेक्टर्स ऑफिस में जाओगे ही आप हाँ. और वो दे एंटरटेन यू. ऐसी बात नहीं है. आपके But you can't go without a need. Like, can you go and just show up at their office? इंट्रोडक्शंस होते हैं उनके. Days रहता है introduction. डेज होते हैं. आप वैसे भी चले जाओ क्योंकि हम लोग जब कास्टिंग कर रहे थे इसकी तो अगर हमें कोई फिट होता था तो हम उसका ऑडिशन भी ले लेते थे. But they'll how will they let you through the gate? Yash Raj का gate रहता है ना? नहीं They don't check, No, ask no. you anything at the gate. नहीं यू कम इन यू. हम कितने लोग आते थे यार रैंडमली. वो पता नहीं अभी भी होता है यार. यू गो देयर यू आस्क देम कि यार डू आई फिट इन समवेयर कि लुक वगैरह देख कैन बी यूज्ड टू ऑडिशन. मैंने लिए हैं ऐसे 2-3 ऑडिशंस. काफी 2-3 भी किया. बहुत ऑडिशंस लिए. कुछ नहीं तो इंट्रोडक्शन तो ले ही लेते थे हम लोग बिकॉज वो कहीं ना कहीं फिट हो जाता है कभी जब सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं. हमारे ऑप्शंस खत्म हो गए थे यार. आई वाज टेलिंग यू राइट. वो जयेश में जोधा के लिए हम लोग एक छोटी बच्ची की कास्टिंग कर रहे थे यार. वी ऑडिशन एवरीवन. Yeah, kids are difficult also to cast. क्या करोगे यार आप. Yeah. एक टीम हमारी गई हुई थी. वो कुछ तो बॉडी बिल्डर चाहिए थे. मैं इसको फोन कर रहा हूँ यार कि भाई पंजाब में कोई है, हरियाणा में भाई बॉडी बिल्डर बता मेरे को यार. उसने पता नहीं कहाँ के नंबर दिए. वहाँ 2 टीम गई. एक टीम गई हुई थी 2 बंदे हमारे वहाँ पे. बट दे एक्चुअली कास्टिंग करी उन्होंने वहाँ अच्छी. तो दे एंडेड अप इन द फिल्म एज वेल. इट्स नॉट इजी मैन जैसा लगता है. एंड यार लोग बोलते बहुत कुछ है बट टू बी ऑनेस्ट लोग बोलते हैं हाँ एक चीज बहुत आजकल चलती है कि ऑडिशन मैटर नहीं करता कि एक्टर के लिए. क्यों? ये मतलब? कि प्रोड्यूसर के थ्रू ही आ जाते हैं या फिर लिंक्स के थ्रू आता है. अब ऐसा नहीं है. मतलब जो मर्जी आप करो आपका ऑडिशन ही देखा जाता है. 100% देखा जाता है. और टू बी ऑनेस्ट अगर आपका ऐसा भी देखा मैंने कि यार कोई लिंक जुगाड़ लगा के आए लोग वो भी फेल हो गए बिकॉज किसी थर्ड पर्सन का ऑडिशन वाज Better. बैंग ऑन. Okay. बैंग ऑन. तो यार वो है एक पहुंच आपको एक पोजीशन तक पहुंचा देगी. आपका टेप वहां तक पहुंचा देगी शायद डायरेक्टर तक या प्रोड्यूसर तक. बट एट द एंड आपका ऑडिशन ही मैटर करेगा. तो वही हुआ यार. बैंग ऑन ऑडिशंस दो आप. वॉइस वर्क्स. How do you meet casting directors? When start में कैसे किया था तूने? start में bro, like you give the introductions and I didn't get any call from the introductions. So I met one person who knew one of the casting assistants of Mukesh Chabal. And that was my first audition for a film. नहीं तो इससे पहले पूरा ads का था. Yes. Yeah. Then I got that. Then उसके बाद मुझे फिर वहाँ से आता है Okay. उस केदारनाथ मूवी. हाँ. Yeah. Yeah, Robbie gets slapped in Kedarnath. यार बट वो बहुत प्रोमिनेंट है डूड. लाइक इवन इफ यू आस्क समवन ना वो एक ऐसा मतलब वो No, everyone remember him. Yeah. नहीं बिकॉज कि थप्पड़ तो मारा है ना. वो एक ही बंदे को पड़ा है पूरे You मूवी में went to watch the थप्पड़. movie, na? And you didn't know before the no, movie. Garima went and didn't know. You told me about Kedarnath before. Acha, Garima told you. Yeah, so she sent me a photo from the movie theater. Yeah. Robbie. I remember. I remember. इतना थप्पड़ पड़ता है यार वो. उसके बाद तो फिर the same assistant keeps you calling. Yeah, I If think. you have done good. Yeah, once you get that slight comfort, create that comfort zone with someone, I think they'll more comfortable calling you. They're Calling like, you, yes. He's gone for shoot. They Yeah. were happy with him. He's a reliable person. Correct. We can call him back. It's just that first thing is tricky. First thing is very tricky and bit difficult and
depends on luck also. Your connections matter a lot. यार मैं Find someone who knows the casting True. assistant, basically. I got the audition for One Day Bubble 2 because of him. Otherwise, I have not given any audition at BioRef. Okay. Yeah. भाई होता क्या है ना, बेसिकली फोल्डर्स बने होते हैं. हाँ, एटलीस्ट हाँ. मैं जहाँ काम करता हूँ हम लोग ऐसे तो अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं. NSD पास आउट, Correct. FTI पास आउट, एंड कोई फिल्म करी है, नोन, सेमी नोन, ऐसे फोल्डर्स बने हुए हैं सब जगह. तो उसमें ना हर एक असिस्टेंट के अपने फोल्डर्स भी हैं. तो दैट्स हाउ यू गेट इन, कि आप वो घुस जाते हो. किसी एक बार किया काम तो आप होते हो उसमें. Correct. किसी के फोल्डर में शायद आप सेमी नोन में भी हो गए अगर आपने काम कर लिया. तो जनरली सेमी नोन की डिमांड ज्यादा रहती है, फ्रेशर्स की बहुत कम होती है. Freshers की तो बहुत कम है, semi-noms की नहीं होती. Yeah. Also, the additional skills also matter. 100%. Yeah, जैसे जैसे if you know MMA or you are a runner, you know Horse ride- cricket. horse riding, For yeah. example, Jersey movie was when audition हो रहा था जब उसका. तो whoever knows, या just like him, he knew he was a avid mountaineer, trekking. तो आई थिंक एक्चुअली मेरी कास्टिंग जो फिल्म में थी ना ऊंचाई में, वो बहुत रैंडम था. क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी थी, कुछ 1.5 साल हो गया था मेरे को BioRef से निकले बस. मेरा कोई, टू बी ऑनेस्ट, मेरा इधर मुकेश चावला कोई नोन तो नहीं था. तो और मैं घर चला गया था यार, मैं घर पे थोड़ा काम वाम था, मैं वहाँ कर रहा हूँ. रैंडमली मुझे एक दिन कॉल आता है कि हम ऐसे से बोल रहे हैं एंड वी नीड योर ऑडिशन. उस टाइम पे कोविड आ गया था. तो मैंने बोला यार मैं आई वोंट बी एबल टू मेक इट. कहेगा नहीं प्लीज डू. एंड उसने मेरे को डिटेल्स भेजी. तो अपेरेंटली उस डिटेल्स की मेरा ऑलरेडी एक ऑडिशन बना हुआ था किसी और शॉर्ट फिल्म के लिए. तो आई जस्ट, मेरे पास मैं थोड़ा बिजी भी था, मैंने भेज दिया वो. एंड इमेजिन यार, मतलब वही मैं जैसे बोल रहा था कि ऑडिशन डजंट मैटर या फिर ऑडिशन ही मैटर करता है, वही मैं बोल रहा था. वो इतना ज्यादा एप्ट था उस कैरेक्टर के लिए बिकॉज दे वर डिमांडिंग द सेम कैरेक्टर. उसमें ऑडिशन में मैंने कुदरती ऐसा किया था कि आई एम गोइंग विद वन ऑफ माई क्या बोलते हैं गर्लफ्रेंड, और गाड़ी वाड़ी चला रहा हूँ मैं, लॉन्ग ट्रिप में जा रहा है, और ऐसा ही कुछ दे वर लुकिंग फॉर इन द फिल्म. तो मतलब यार किस्मत भी होती है यार, मतलब क्या ही बोलूँ इससे ज्यादा, मतलब किस्मत ही है यार. एट द एंड ऑफ द डे है यार वो. मतलब लोग बोलते हैं किस्मत नहीं है यार, किस्मत होती है बिकॉज आप जुगाड़ लगा के, वही है ना, आपका टेप पहुंच जाएगा वहाँ पे. yeah. वहाँ पे व्हाट उनके दिमाग में क्या क्लिक कर जाएगा डायरेक्टर जो देख रहे हैं या फिर असिस्टेंट्स जो उनके देख रहे हैं, यू जस्ट डोंट नो. So in a 12-month period, how many auditions would you normally give? नाउ Yeah. या फिर नहीं अभी पहले? लाइफ में. अभी आजकल फॉर मी यार कम हो गए हैं, बट आई गिव गुड ऑडिशंस एज इन फिल्म्स के होते हैं या फिर वेब सीरीज के होते हैं. एटलीस्ट आई गिव लास्ट ईयर में 5-6 मैंने, थोड़े ज्यादा दिए होंगे शायद. और But उसमें Good ones are very less. कितने कन्वर्ट होते हैं पर? यार पंगा पता क्या है, आधों में आप शॉर्टलिस्ट भी हो जाते हो, उसमें भी शॉर्टलिस्ट के बाद भी पता है उन लोगों ने हर एक कैरेक्टर के लिए ना 3 बनाए होते हैं. एक मेन होता है, 2 शॉर्टलिस्टेड अलग होता है कि अगर इसने मना कर दिया फॉर सम रीजन तो सेकंड बंदा है, सेकंड नहीं बना कर दिया थर्ड बंदा है. तो ऐसा रखता है. तो यार बहुत बार मैं थर्ड में जाता हूँ एंड देन फर्स्ट वाला हाँ कर देता होगा शायद तो मिलता नहीं. तो ऐसा बहुत बार होता है यार. Correct. कितना ही कन्वर्ट हुआ है यार, 2 या 3. मेजर 1 तो ऊंचा ही हुआ है मेरे लिए तो अभी तक. बाकी छोटे मोटे होते रहते हैं. शॉर्ट फिल्म्स करते रहते हैं यार हम लोग अपने ही फ्रेंड सर्कल में, कोई ना कोई, या फिर वेब सीरीज वगैरह का भी आता है, बट कन्वर्जन बहुत कम है. But then how do you spend your time through the year also? Because you kind of also have to do other things. You have to also keep up with acting and also practice acting. How do you spend your years then? यार मेरा तो वही है, जैसे मैं बता रहा था कि फ्रीलांसिंग का काम भी चलता है बिकॉज यू नीड टू डू सपोर्ट योरसेल्फ. वो है, उसके साथ साथ यू कीप इन टच विद पीपल यार. यू कीप मीटिंग अपने ही जो फ्रेंड सर्कल है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. एक्टर्स जब अकेले हो जाते हैं ना, दे गो टू वेरी डार्क प्लेसेस. वो नहीं, मतलब ट्राई टू अवॉइड दैट. वो है. But तेरे लिए? Same, bro. No, but now what is your side hustle? How are you managing? The money, little bit I got from the film that I did. सेविंग्स. Savings, yeah. Saving. So I mean, every film you do, you just like try and save as much of that money and then. Correct. यार बॉम्बे एक तो महंगा बहुत है ना यार. Yeah, it is. No, even like to go from place A to place B, say the trains are shut one day and you need to go to Thane for shoot. Oh, yeah. 1000 रुपए गए तुम्हारे Yeah. एक साइड के. Yeah, exactly, one way. And in films, they'll give you 250 rupees for transport travel. Yes. That's a fixed rate normally. 250 rupees from wherever you're coming. यार आई मीन यू नो इट बेटर. हम लोग तो फिर भी एक्टर्स का तो और बुरे हाल है. टेक्निकल टीम यार, गेट पेड, AD हो गए या फिर लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स
they also like उनके लिए भी मुश्किल है यार. Yeah. But ADs I think get good money now. Yes. Yeah. नहीं बट हाँ टेक्निकल टीम फिर भी डी है यार. एक्टर्स के बुरे हाल है भाई, स्पेशली जो नए एक्टर्स हैं भाई. No, because if you don't have like savings, if you don't have like money coming in, you'll end up not being able to also give auditions. Yeah. You won't be in the right mental space. You won't be in all that, no? वही ना यार. एक तो आप अभी एक्चुअली ये चीज़ अच्छी है यार जो ऑनलाइन ऑडिशंस हो गए कि आप घर से बना के भेजो, बिकॉज एक्टर भी थोड़ा कंफर्टेबल होता है अपने जोन में और उनके लिए भी थोड़ी सहूलियत हो जाती है, जगह वगैरह बच जाती है असिस्टेंट्स के लिए. बट वो भी सही है. तो मतलब मेरा घर से हो जाता है, अभी तक तो हो रहा है. और ज़्यादा ही अगर कुछ मीटिंग करनी हो तो आई कम हियर. Okay. तो वो So that you're saving money that way by living 100%. I don't have to pay rent. सबसे बड़ा है भाई खर्चा यहाँ पे. Yeah, exactly. Rent and travel. In fact, the food also घर पे तो बनता ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, but if you're living here, you make your own food at home. उसमें manage होता है. वहाँ पे भी हो जाता है, but still खर्चा तो ही है. Yeah, खर्चा है. And what about you? Like, तेरा क्या scene है? Are you also thinking of working from Punjab or No. you want to be here only and base it? Okay. Punjabi industry, dude. We can talk a lot about that. Yeah, Punjabi industry haven't. You guys thought of working in Punjabi They are films? booming, man. They are Booming, yeah. 100% they are booming. In हमारे इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं बहुत. And अपनी चंडीगढ़ में तो अलग ही सीन चला हुआ है यार. चंडीगढ़ में म्यूजिक सीन्स आर वाइल्ड. So wait, which is the hub for Punjabi films? यार चंडीगढ़ ही है, बट चंडीगढ़ इज मोर लाइक मुंबई. जैसे मीटिंग्स होती हैं सारे प्रोडक्शन मोहाली बेसिकली. मोहाली यहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस है, बट शूट वगैरह बाहर ही होता है गाँव वगैरह में, क्योंकि दैट वे दे सेव मनी. किसी का लैंड होता है भाई वहाँ पे, There are no studios as such. क्योंकि आउटडोर ही शूट होता है यार मेजरली. वो खेत कूद में किसी के होता है लैंड. इंडोर भी है तो किसी के घर में है. ऊंचाई यार बहुत अमेजिंग था यार. आई मीन टू बी ऑनेस्ट यार, मेरे को फोन आता है और कि आपका हो गया है सिलेक्ट. तो मैंने सीधा पहला क्वेश्चन ही मेरे को प्रोडक्शन से आया था. आई थिंक रवि सर करके हैं वहाँ पे, तो उनका फोन आया. मैं सीधा ही बोला उन्होंने कि सर बेटा आपका हो गया है ऐसे. तो मैंने काम किया हुआ है, मेरे को पता है वो शॉर्टलिस्ट करके रखते थे दूसरे तीसरे नंबर पे. आई वाज गेटिंग रिजेक्शंस. मैं सीधा पूछा कि सर मतलब हो गया है कि आपने मुझे ऐसे शॉर्टलिस्ट कर गया? नहीं बेटा हो गया है. डैम नाइस. तो फिर मेरे पेरेंट्स को बताया, दे वर हैप्पी कि हाँ चलो ठीक है. फिर मैंने तो उसी टाइम हाँ कर दिया था. बजट मतलब उन्होंने पैसों की तो बात भी नहीं हुई थी, बिकॉज उन्होंने मेरे को बताया था कि ट्रैक पे लेके जा रहे हैं EBC एवरेस्ट बेस कैंप. मैं बोला भाई चलो, क्योंकि वैसे भी वो लाइक अगर आप वैसे भी जाओगे 60-70,000 का तो ट्रैक ही है. Yeah, it's very expensive trek. तो आज लाइक यार कर देते हैं. उसके बाद फिर बोला उन्होंने पैसे वैसे भी दे रहे. मैं बोला यार व्हाई नॉट. हम लोग गए यार वहाँ. द एक्सपीरियंस वाज आउट ऑफ द प्लेस मैन. लाइक मैं वही बोलूँ यार, जैसे YRF एक जर्नी थी मेरे लिए कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है. इतनी बड़ी प्रोडक्शन में इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ, अनुपम खेर, बमन ईरानी, यार वो अपने में एक एक्टिंग क्लास है. Just to be there, just to look at them. And they have a very different, obviously being actors, Approaches. मैं वो एक्चुअली नोटिस कर रहा था. नामचे बाजार में ही था. वहाँ पे एक शॉट है, फिल्म में भी है वो. एक डेड बॉडी आ रही होती है आगे से, एंड दे हैव टू रिएक्ट कि लोग मरते हैं यहाँ पे. दिस इज नॉट अ जोक. दैट वाज द उस टाइम उस सीन का प्लॉट, मतलब वो था कि एसेंस था. उसके लिए प्रेप देख रहा था मैं. तो अनुपम सर वाज देयर. He was prepping, like, इस मूवी में एटलीस्ट he was doing that. He was getting energy out of the environment. ये खड़ा है तो मैं इससे रैंडम लिया. अगर कैमरा में खड़े वो मैं बात कर रहा हूँ उनसे नॉर्मली. I'm in character. मैं कैरेक्टर में बात कर रहा हूँ उनसे कि हाँ भाई कैसा लग रहा हूँ मैं, ये वो जो भी है रैंडम चीजें कि हाँ तूने ब्रेकफास्ट खाया, रैंडम चीजें, बट ही इज इन कैरेक्टर जस्ट टू गेट द फील. तो ही वाज डूइंग दैट. Bawan sir was more going inside, like internalizing himself, I think. तो वो थोड़ा अपनी बैक स्टोरी वगैरह में थे, and he was like into it. And the moment action happened, अनुपम खेर का तो पता ही नहीं लगा भाई. स्विच हुआ ही नहीं. मतलब he was doing this action उसी में है वो. Yeah, it's like a continuation. Yeah, it's like a continuation. हाँ. And Bawan sir का was different. तो वो उस टाइम पे जो भी हुआ उस टाइम पे तो मैंने देखा, पर जब फिल्म में देखा ना मैंने वो सीन, oh my god, amazing. क्योंकि मेरे को वो हम लोग को पिछला नहीं पता कि क्या चल रहा है. तो वो फिल्म में हमने देखा, मैं बोला यार damn, respect.
अमेजिंग यार वो फिल्म देखना बहुत बहुत लाइक यू नो फॉर And also shooting in these areas is really, really difficult. यार मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट मैंने तो प्रोडक्शन वालों को भी बोला था जाके क्रिएटिव हेड है वहाँ पे अपनी क्या बोलता है तो उनको जाके मैंने बोला कि यार मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बैकपैक वगैरह लेके जाएंगे भाई वहाँ टेंट वेंट पे रुकेंगे मेरे को नहीं पता था यार कि इतना लैविश होने वाला है वहाँ पे दे हैड लाइक एवरीथिंग सेटअप होटल्स वगैरह पे ये वो तो हम तो भाई वैसे आया हुआ था तो शी स्टार्टेड लाफिंग बट वो चीज़ है यार यार हम लोग को सर ने पहले बताया था ऑब्वियसली हमारी फिल्म में डायलॉग्स नहीं थे बट वी आर इन द फिल्म तो ये चीज़ बताई थी उन्होंने बट जैसे जैसे चलता रहा ना वी गॉट डायलॉग्स और वो इम्प्रोवाइज ही था मोरलेस तो वो हुआ जबकि फिल्म में वो एडिट हो गया बाद में बट एक सीन था यार उसमें हम लोग भी यार सबका फर्स्ट ब्रेक था हम लोग भी लाइक 6 ऑफ अस इन द फिल्म जिनका फर्स्ट ही ब्रेक था वो एक तरीके से तो वहाँ पे यार आपको ना इतनी बड़ी जब फिल्म आती है आई वाज टेलिंग यू राइट कि आपको फाइट करना पड़ता है अपने हम लोग लिटरली लाइक यू नो फ्रेम के लिए व्यूअर एक तरीके से आप बोल लो कि दिखने के लिए हम लोग वहाँ थे कि यार दिख जाए इस फ्रेम में उस फ्रेम में बिकॉज यार इतने एक्टर्स है उसमें बड़े बड़े वो भी बहुत मुश्किल है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डेज हमारा एक शॉट लग रहा था सर ने बोला था वो उसमें तो हम लोग ही देख रहे थे कि आप पहुंच गए हो ईवीसी नाउ लाइक यू नो सर आए उन्होंने फटाफट बोला कि आपके पास पहले तो आधा घंटा है क्योंकि इन लोग का लंच चल रहा था तो ये लाइक इनका लंच चल रहा है मैं आपके शॉट्स उड़ा दूंगा डीओपी के साथ आए सूरज सर एंड फटाफट उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यार ये वाला मेरे पास आया शायद बेटा वन मोर थिंग अबाउट सूरज सर इज हर एक चीज ही विल एक्सप्लेन फ्रॉम 0 to 100 अगर मैं आखिरी दिन भी उनके साथ शूट कर रहा हूँ वो मुझे स्टार्टिंग से समझाएंगे कि हाँ बेटा हम लोगों ने वहां से शुरू किया था एंड ये आपका ऐसे ऐसे जर्नी यहाँ तक पहुंच गई है नाउ यू आर हियर तो ये एक्सप्लेन करके सर ने बोला कि यार ऐसे ऐसे इमोशंस हमें करना है 3 इमोशंस आपको कैच करना है मैंने रॉबी को बताया हम लोग बैरिजॉन में हम लोग ये करते थे यार एक इमोशन खत्म होगा दूसरा पकड़ो वो खत्म होगा तीसरा पकड़ो तो यार कैमरा लगाया यहाँ पे सामने पहाड़ है इतना क्रेजी था कि नीचे ऐसे 360 ऐसा डिग्री में घुमाना था शॉट और यहाँ पे लाइट वाले खड़े हैं ये लेके क्या बोलता है थर्मोकॉल लेके इतना बड़ा और मेरे को मैं फुल अंदर घुसा हुआ हूँ कि यार हम मतलब 3 इमोशंस देने हैं मैं अपना प्रेप कर रहा हूँ और भाई आपके पास टाइम है आधा घंटा में 3 लोगों के शॉट्स लेने हैं तो टाइम कुल मिला के 10 मिनट का भी नहीं बचता आपको उसमें से भी टेक्निकली आप 2 या 3 मिनट का प्रेप का टाइम है आपके पास बेसिकली एज एन एक्टर और भाई यहाँ पे कैमरा लगा है यहाँ वो बंदा चिल्ला रहा है ए लाइट दे रहे हैं मुंह पे ए देख रिफ्लेक्शन आ रही है देख रहे ये चल रहा है यहाँ पे फुल मुंह पे चिल्ला रहे हैं आपको सब कुछ भूल के वो करना है तो वो एक था भाई मेरे लिए कि यार और वो शॉट शुरू हुआ और हम लोग मैं तो भूल गया था भाई मैं आई वाज देयर लाइक मैंने उसको साथ में जो फ्रेंड था उसको बोल दिया भाई मैं कर रहा हूँ तो बस लाइक यू नो बी देयर तो वो हो गया अच्छा शॉट हुआ बट वही यार मतलब दीज काइंड ऑफ थिंग्स चैलेंजेस है भाई ये लोग बोलते हैं कि हाँ कई एक्टर्स होते हैं जो नहीं कर सकते शोरगुल में एक्ट बीइंग लाइक आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो एक आधी फिल्म में आपको ऑप्शंस नहीं होते यार आई एम श्योर रॉबी के साथ भी ऐसे हुआ होगा Yeah, no, they'll change you if you have a problem. हाँ भाई रिप्लेस करो और क्या या फिर काट देंगे आपका सीन Yeah. So tell me, Robbie, Imtiaz Ali, Diljit Dosanjh, Robin Yeah. Singh, what role do you play in the film? And how did you get this? Who casted you for it? What are you doing in the film? So basically, I read an article in the news in 21 around Feb March, that there is a film getting made on Punjabi singer called Amar Singh Chamkila, which is my favorite artist and which was my favorite artist back then. I was in 4th or 5th class when I first listened to his song. He's a cult basically He's a cult basically. Punjab You know. You'll get to know about his life story in the movie. no. So yes, I was very intrigued and very much on my toes that I want anything in this movie, whatever I get. Then I approached. So basically, the audition happened in 2022 April. Prepared for the audition, Bukesh Chabda, same guy, and very close person, Pratibha. She was with me. She really pushed me through the tough times, and we practiced for 5 hours before the audition, and we did some on the video call actually.
We did some 50, 60, 70 rehearsals before the... So I was so up for it that I wanted, and by the end of the audition at their office, I knew that I'll get it. 100%, there is no chance that I'll not get it. But it was for a shorter secondary character, basically. Then there was no calls, no text, and the casting director also, the assistant also sent in. सर ने अभी तक देखा नहीं है, अभी तो प्रोसेस चल रहा है. जून निकल गया, मई निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया. बट मेरा होप था कि जब भी वो देखेंगे, they will 100% call me because बहुत अच्छा हुआ था ऑडिशन, टच वुड. बाकी ऑडिशन जितने भी मेरे उससे पहले हुए थे, जितने भी मूवीज के हुए थे, they were like okay. But I really put my heart into it, and it was my last sort of chance. My parents told me that come back if you don't get anything this year. That was the last year, 2022. They gave me an ultimatum that this is the last year. If you do it, you do it. Otherwise, go to Canada or something. We actually spoke about this. Yeah, we when it spoke happened. about it. So it was kind of a do or die situation for me. And I'm that kind of a person who, Thrives in pressure. yes, thrives in pressure and also gets his ass up when when there is like, you know, when there's no choice. there is no choice. Yes, yes. So then someone told me that Imtiaz sir has liked your audition. I said, okay, let's see what happens next. Then the casting assistant told me that Imtiaz sir wants to meet you at his office. I'll arrange the meeting and this is the time. So I met him in the office and he came. That was the first time I met him. Very, very, very grounded and very humble human being. He's just one of us, just like us. You know? And उन्होंने लैपटॉप खोला और बोले कि इसका चलाओ यार audition. And he started talking about the audition. That was very fascinating for me. कि he's like actually telling me कि इसमें क्या था, इसमें क्या था. Every bit and part की इसमें थोड़ा ऐसा हो सकता है, तू दोबारा दे सकता है क्या? थोड़ा सा, बाकी सब ठीक है. And ask me what मेरा पूरा background या जो भी होता है. तो वहाँ पे उनका एक असिस्टेंट बैठा था, तो हमने एक दोबारा वहीं रिकॉर्ड किया. वो भी बहुत अच्छा हुआ था. उनका प्रोडक्शन से कॉल आया मुझे. यू बिन लॉक फॉर किक्कर्स पार्ट. Kicker is a primary part. I started like, what? I didn't know that kicker is a primary. मैंने तो पम्मा के लिए दिया था. आप मुझे किक्कर के लिए क्यों दे रहे हो? Then जो वहाँ पे मेरे साथ बात कर रहे थे बोले कि अरे किक्कर तो इनफैक्ट एज अ प्राइमरी कैरेक्टर. तो आप पम्मा के लिए क्यों बोल रहे हो कि आपको वो चाहिए? तो दिस इज द थिंग. So I said okay. Then I was locked. Then had few readings, 5-6 reading. Very nice process about readings. तो उनके ऑफिस में ही जाते थे. काफी improvisations करवा के देखी सर ने मुझसे, इम्तियाज सर ने, कि सेम लाइन बोल रहा है फॉर एग्जांपल कि मान ले अभी नीचे से कोई बंदा तेरे को मारने आ रहा है एंड यू हैव टू टेल दिस लाइन टू द सामने वाला. वही बैठे थे कि मुझे तूने बोलनी है यही लाइन, तो कैसे बोलेगा? फिर देयर इज समवन सिटिंग इन द रूम, उसको सुनना नहीं चाहिए बट मुझे बता सेम लाइन. तो ऐसे 10-12 वेरिएशन उन्होंने मुझसे करवा के देखे. एंड रीडिंग में भी वो करवाते हैं कि अभी पूरा फ्लैट रीड कर, फिर एक एक शब्द को तोड़ के जस्ट कि भाई एक बार लाइन हो जाए. Yeah, I got finalized for the primary character and I was very happy that at least, you know, I got a chance. And that too in a very big project. So how was it working with Imtiaz Ali on set and Diljit Dosanjh? With Imtiaz sir is very easy because he tells you the whole story before the scene. Yeah. What has happened before the scene. How you landed into this scene. How you come here? Yeah, how you come here and he, you know, वो टाइम बिताते हैं आपके साथ. जितना भी चाहो आप, जितना मैं और क्वेश्चंस पूछते जाऊंगा, he will never get bored. And he is a storyteller. He likes to tell stories. तो उससे रिलेटेड भी ना हो कुछ और, you know, वाया और भी layers में वो कोई और भी स्टोरी बता देंगे which would help in this scene. In many instances, in many before scenes, he told me stories which were not completely associated to the script, But just for your but character. just for the feel or just for the character or anything. So that really helped me. So in a way, it was very easy. Also, he orchestrates you sometimes if you are not doing anything with your, like, physically, if you're not, you know, it's not looking appeasing.
aesthetically or whatever, he tells you to do certain actions which will make the scene aesthetically really beautiful or the acting really beautiful. Mm-hmm. And he tells you to make them naturally, bro. It gets very easier, yaar, when it happens. Suraj sir ka bhi, that thing is very common. He wants you to be there in the moment. And uske liye whatever works. And somehow all the directors, they know, like, how to एक एक्टर से कैसे निकलवाना है यार, उनको पता होता है. सूरज सर का भी ऐसे था. I saw him working with, हमारे साथ तो करते ही थे यार. मतलब पता नहीं, एक स्ट्रेंज सी चीज थी, पता है. एक सीन में I was like, मेरा माइक कहीं और था and I had to smile, क्लोज लगा हुआ था. And वो हुआ and I did this and he said cut. तो शालिन स्माइल नहीं आ रही वैसे. I was like, एकदम से हो रहा है यार, क्या इन्होंने दिख गया एकदम से यार कि लाइक मन से नहीं थे. I did दिल से ऐसे हंसा तो he said हाँ ये सही है. I was like man, तो Attention to detail. Yeah. They have in Also, common he that. take lot of takes, bro. Yeah. Sometimes, not for me, but for some actors, if he's not Till fully he gets what they're satisfied, doing. he Yeah. take like 30, 35, 40, sometimes 45, That's a lot. 45 takes. But sometimes you have to do it to get the perfect shot, no? Yeah. He's a very like that. Unless he doesn't get it, he just keeps doing it. So if you guys could start over from, if you had to move to Bombay now, what would you do differently? Nothing, I would say nothing. nothing. Yeah, and Same same thing. here. Why? It is the Because that's the process, bro. Yeah. You have to go through it. यार मेरे लिए वही है कि यार there's no struggle. Like हाँ हमारा शो का ये हम strugglers है, but as such there is no struggle यार. It's learning. It's learning. हर एक चीज यार. अब मेरे को काम नहीं मिल रहा है, मैं ऑडिशन में हाथ खड़ा करके यार ये नॉट फिट खाया तो पता है ना यार कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. वो बहुत चीज सीखने को मिलती है. I would do the same mistakes. Yeah. And what kind of advice would you give to guys who are moving to Bombay to become actors? Have no expectations. You'll love this city, man. If you have Yeah. expectations, then Yeah. Yeah, don't time bound anything, you know. Yeah. Actually यार ये चीज common है. हम Yeah, people say 1 year, 2 years. हम no, लोगों को कुछ नहीं नहीं, होगा. हमारे सर्कल में नहीं था यार. Yeah, it was not for me, at least. मेरे लिए भी नहीं था, इसके लिए भी I नहीं was था. like कि जब तक नहीं लगा भाई लगे रहो. हाँ लगे रहो. 10, 12 जब तक नहीं होता. नहीं क्या हो जाएगा, मेरे लिए सारी चीजें सेकेंडरी है. जॉब कर रहे हैं ना, पैसे चाहिए ना, पैसे के लिए कर रहे हैं काम. बट एट द एंड इस ये है ना मेन चीज. वहां से अगर पैसा भी बना लिया, आई पुट इट हियर ब्रो. सो इट्स देयर. वो क्लैरिटी आ जाएगी. नए लोगों में नहीं होती यार वो क्लैरिटी. वो चीज आएगी अपने आप ही बनती है. आई थिंक हीट बन जाते हो आप खा के. थिक स्किन भाई, वी आर थिक स्किन ब्रो. Yeah. But I also like to tell you that about Diljit Dosanjh, there is a perception that he's a singer. He's a good actor. There's a perception that he's a good actor, but how? What is his process? Yeah. He seldom forgets his lines. There was only one instance where he forgot his lines. Otherwise, no chance that he will forget his line. Second, he doesn't get affected by the surroundings much. The hustle bustle of the set. Yeah. He's fully focused and, with full energy, ready to give his shot. Very much energetic performance. And I would say that, bro, it reflects on the screen. दिखता है यार भाई, दिखता है 100% दिखता है. Yeah. I remember ना ये अनुपम सर और ये लोग, it's something else altogether यार. मतलब आप स्पेशली हम लोग, अगर जैसे मेरा प्राइमरी पार्ट अगर आपका हो तो यू आर देयर इन पूरे मेकिंग में. हम लोग पूरे उसमें नहीं थे. दिल्ली वगैरह में जो शूट है उसमें हम लोग नहीं थे, बट नेपाल वाले में थे. तो एक साइड ऑफ इट दिख रहा था. वो हमें लग रहा था कि हाँ यार अच्छा है, बट स्क्रीन पे यार बैक स्टोरी जब निकल के आती है ना, समथिंग एल्स ऑल टुगेदर. तो वो दिखता है यार. आप एक एक चीज आपके दिमाग में क्या चल रहा है ना. जैसे वो एग्जांपल दिया था कि वो हंसी नहीं आ रही थी, तो वो दिखती है स्क्रीन पे. आप कैमरा से नहीं बच सकते भाई. Also, he fully surrenders, at least in this movie, fully surrendered to the director. Okay. I think we're done with the episode. Like, share, subscribe. Thank you for watching. And please cast Robbie and Shalin in your thing if a casting director was watching.